आपके आगमन पर हमारा नमन। मैं खतीजा शैना सर्वप्रथम भगवान से आशीर्वाद मांगने प्रार्थना गीत गाने के लिए माजीन और सदस्यों को आमंत्रित करती हूँ। माजीन, अब नृत्य द्वारा आपको स्वागत करने के लिए हमारे सामने स्नेहा आचार्य को निमंत्रित करती हूँ। जनन जनन तनन तनन तो जनन जनन तनन तनन तो जनन जनन तनन तनन जनन जनन तनन तनन तो जनन जनन तनन तनन तो जनन जनन तनन तनन गीत धुनी को तकधी नात्र कीट तो नाच रहे गोरी तारे गए तुम गीत धुनी को तकधी नात्र कीट तो नाच रहे गोरी तारे के लिए धन्यवाद स्नेहा आचार्य। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु के नायर जी, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर है, सेंट अलोशियस मानित विश्वविद्यालय के प्रभारी उपकुलपति रेवरेंड डॉक्टर प्रवीण मार्टिस एसजे,
एडमिन ब्लॉक के निदेशक डॉक्टर चार्ल्स फुटाडो, हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद प्रभु जी को मंच पर आमंत्रित करने के लिए संघ की अध्यक्षा मैडम शैला पिंटो जी से निवेदन करती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। कर्नाटक में लगभग 3 दशकों से हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना मूल्य योगदान देने वाला आयोजन प्रेरणा 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत भाषण के लिए हिंदी संघ के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद टी छेत्री जी को आमंत्रित करती हूँ। यद्दाचरितिष्ठेष्ठो तत्तदेवो तरोजना शयत प्रमाण कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं हम भी उनसे प्रेरणा लेकर वैसा ही आचरण करते हैं। तो हमारे बीच में ऐसे ही महानुभाव और विद्वज्जन प्रस्तुत हैं जिनके चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम सभी हिंदी विभाग एवं हिंदी संघ द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय हिंदी उत्सव प्रेरणा 2024 क्षितिज के पार के लिए एकत्रित हुए हैं। कई वर्षों से प्रेरणा उत्सव लगातार हिंदी पढ़ने, लिखने, संवाद करने तथा हिंदी में रुचि रखने वालों के लिए मंच प्रदान करता आया है। यह विशेष और गौरवशाली क्षण हमें हिंदी की सुंदरता, समृद्धि और साहित्यिक धरोहर के साथ जुड़ने का माध्यम प्रदान करती आई है। मैं मंच को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि आदरणीय रेणु के नायर जी, जोनल हेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चेयरमैन टॉलिक का संत एलोशियस मानित विश्वविद्यालय की ओर से तथा हिंदी विभाग और हिंदी संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं इस उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय प्रभारी कुलपति रेवरेंड फादर डॉक्टर प्रवीण मास्टर्स एसजे का स्वागत करता हूं, जिन्होंने हिंदी विभाग द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में हमारा सहयोग एवं मार्गदर्शन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हमारे एडमिन ब्लॉक के निदेशक आदरणीय डॉक्टर चार्ल्स फुटाडो जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने सदैव भाषा से संबंधित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपना मार्गदर्शन दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आदरणीय मुकुंद प्रभु जी का भी स्वागत करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह उत्सव पूर्ण होने जा रहा है। मैं हिंदी संघ के अध्यक्ष श्रीमती शैला डिसूजा व श्री लीलू कुमारी रजक का स्वागत करता हूं। मैं हिंदी संघ के सचिव शानिफ अबू बकर और फातिमा का भी स्वागत करता हूं। मैं बाहर से आए हुए सभी महाविद्यालय के अध्यापकगण, प्राध्यापकगण एवं सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। अंततः मैं हिंदी विभाग के प्राध्यापकगण डॉक्टर संध्या सिरसीकर जी, सुश्री रॉयसी रेखा ब्रैक जी, श्रीमती कविता जी एवं इस उत्सव में मौजूद सभी अन्य विभाग के प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से आए शोधार्थी विवेक जी का भी स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी वॉलंटियर्सों का, हिंदी संघ के सदस्यों का, तकनीकी विभागों का एवं मीडिया टीम का, सभी का मैं इस सभी अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय हिंदी उत्सव प्रेरणा 2024 क्षितिज के पार में स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय प्रभारी कुलपति जी रेवरेंड फादर डॉक्टर प्रवीण माटी जी हमारी मुख्य अतिथि का सैंपलिंग देकर स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा हमारे विभाग अध्यक्ष जी डॉक्टर मुकुंद प्रभु जी, हमारे प्रभारी कुलपति डॉक्टर प्रवीण माटिस जी का सैंपलिंग द्वारा स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं आगे हमारे हिंदी संघ की अध्यक्ष डॉक्टर शैला डिसूजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे निदेशक चार्ल्स फुटाडो जी का स्वागत सैंपलिंग देकर करें। इस उत्सव में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत है। असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतम गमया। इसका मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने के संकेत के रूप में दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं
सम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषा प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषा प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। अब मैं एडमिन ब्लॉक के निदेशक डॉक्टर चार्ल्स फुटाडो जी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Respected dignitaries on the days and my dear students, I apologize for speaking in English. I studied compulsory Hindi till my 10th standard and I got the highest marks in my class in Hindi also. But whatever I know about Hindi is basically Bollywood taught. You know, I've watched Hindi movies and lyrics of Hindi songs. And what I have found in Hindi is that it is a beautiful poetic language. And more importantly, I have found that Hindi is perhaps the only language that can bind us together as one nation. With all our mother tongues, with all our linked languages, though we in the South have rather stayed away from this beautiful language, I feel that this is the language that has the potential to keep us together. Prerana started long back. I know because Dr. Mukund Prabhu had come to me and he was very excited about this blockbuster program of the Hindi department. And Dr. Mukund Prabhu is blessed with a very active, proactive, I must say, Hindi department, which is a beautiful blend of experience and energy. I think we have a lot of youngsters who have joined the staff in the Hindi department, and Dr. Mukund Prabhu brings in a lot of sage experience into the department. So I'm very proud of the Hindi department being in the admin block, and that is the reason why I am here today to speak as the director. I would like to wish this program all the best, and we are deeply honored to have Madam with us as the chief guest, who is the head of the bank, I think across 3 states, if I'm not wrong. The entire coastal belt, yes. So thank you, ma'am, for responding to our invitation and being here to inaugurate this great intercollegiate fest, which is very important for St. Aloysius College, which has recently become a deemed to be university. So I would like to wish the fest all the best. All who are here from different colleges, I'm sure you'll have a wonderful day in this 144-year-old institution. Enjoy yourself, learn a lot of things, and most importantly, understand that you will be participating and you will be winning, all of you. Those who win the prizes and those who do not win the prizes will win a lot of experience, will win how to build relationships, will win how to live in this world. So thank you for this opportunity to speak as the director this morning, and I would like to wish Prerana all success. God bless. आपके विचारों ने हम सभी को प्रेरित कर दिया। आदरणीय डॉक्टर चार्ल्स फुटाडो जी, आपका धन्यवाद। अब मैं हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद प्रभु जी से निवेदन करती हूं कि वे प्रेरणा उत्सव और प्रेरणा पत्रिका के महत्व को बताते हुए आज के मुख्य अतिथि का परिचय हमसे करवाएं। को सुप्रभात।
मंचासीन विद्वज्जनों, आज के इस कार्यक्रम के सभाध्यक्ष रेवरेंड डॉक्टर प्रवीण मास्टिस जी, मुख्य अतिथि रेणु के नायर जी, एडमिन ब्लॉक के निदेशक डॉक्टर चार्ल्स फुर्तादो जी, इस कार्यक्रम के संयोजिका शैला पिंटो जी, सचिव शानिफ अबूबकर जी, सभागार में बैठे हमारे ओएल ऑफिशियल लैंग्वेज के अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जॉन अब्राहम जी और मैडम के प्यारो पुरंदर जी, अलग अलग कॉलेजों से आए हुए अध्यापकगण, विद्यार्थी वृंद और हमारे विभाग के अध्यापकगण और यहाँ उपस्थित प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अभी अभी हमारे निदेशक के द्वारा बताया गया ये बहुत पुराना उत्सव है, हिंदी विभाग और हिंदी विद्यार्थियों का उत्सव है प्रेरणा। लगभग 30 सालों से ये चलते आ रहा है। ये मंच हम इसलिए उपस्थित करते हैं, हमारे कॉलेज में ही नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पर, जो पहले मंगलूर विश्वविद्यालय था, अब तो हम भी विश्वविद्यालय बन चुके, अब तो हम ये विश्वविद्यालय अंतर विश्वविद्यालय स्तर का उत्सव भी बता सकते हैं। मंगलूर विश्वविद्यालय और अलोयसियस विश्वविद्यालय, पहले तो हमको इंटर कॉलेज बताते थे, अब इंटर यूनिवर्सिटी बन गया। ये लगातार चलता रहा। इसका उद्देश्य नाम में ही निहित है, प्रेरणा। हमारे विद्यार्थियों में निहित जो प्रतिभाएं हैं प्रस्फुटित होने वाली, उसको उजागर करने का मंच संत अलोयसियस महाविद्यालय और कॉलेज करते आ रहा है और आगे जाने का उद्देश्य भी है। प्रेरणा का नाम ही बताते हैं, सबको प्रोत्साहित करना। इसमें लगभग 30-35 कॉलेजेस तक प्रतिभागी होते थे हर साल, और हमारे विद्यार्थियों के बीच लीडरशिप क्वालिटी, जो नेतृत्व गुण है, वह हम उनको यहाँ सिखाते थे। और एक हिंदी भाषा जो है जोड़ने वाली भाषा है, जैसे अभी निदेशक जी ने भी बताया, वैसे हम सब कॉलेज के विद्यार्थियों को हिंदी के द्वारा, हिंदी भाषा के माध्यम से यहाँ जोड़ने का उद्देश्य रख के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमसे जो उत्साह पाके आलवास कॉलेज मुड़बिद्री ने अपना भी एक उत्सव उमंग प्रारंभ किया। एसडीएम कॉलेज उजरे में भी एक छोटा सा उत्सव प्रारंभ हुआ। खैर, भले ही ये आगे बढ़ता रहा, लेकिन बीच में कोविड-19 ने हमारी इस रफ्तार को रोकना चाहा। लेकिन क्या करें, जिसके मन में उत्साह है, जिसके मन में आगे जाने की प्रेरणा है, इसलिए हम उसको रोक नहीं पाए। इसलिए मुझे एक शायरी याद आती है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलाना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्योंकि कोविड ने बहुत लोगों को ये समीचीन बताया। इसलिए हमने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स रखे, वर्चुअल। भले ही बाकी कॉलेज के विद्यार्थी ना जुड़ सके, हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों को जोड़ के ऑनलाइन प्रेरणा के रूप में ही हमने उसको मनाया। इसलिए जहाँ जान है वहाँ जहान है, जो बताया जाता है, हमने उसको निभाया। अब बात रही हमारी सह संस्था, जो इसको मदद देने वाली, इसको हम टॉलिक बताते, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। इसमें नगर के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, उनसे हम कुछ मदद मांग के और हमारा भी शक्ति उपयोग करके हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते गए। पहले तो कॉरपोरेशन बैंक हेड ऑफिस इधर था, वहाँ से हम उनके साथ संपर्क में थे, लेकिन यह अब नया रिश्ता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके साथ हुआ और हम बहुत खुश है। मैडम रेणु जी नायर जी जो जीएम है, बहुत बड़े बड़े पद पर है, फिर भी हमारे इस कार्यक्रम में आके यहाँ हमारा उत्साह बढ़ा रही है। और हमारे ओएल अधिकारी भी जॉन अब्राहम जी, जो हमारे साथ ऑनलाइन सेमिनार्स में, वेबिनार्स में भी जुड़ते थे, उन्होंने भी हमें बहुत मदद दी। इसलिए वास्तव में मैं आप दोनों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि टॉलिक तो बैंकिंग
और अन्य क्षेत्र के पैसे की बात है, जैसे भारतीय संस्कृति में बताए तो लक्ष्मी वहाँ है, सरस्वती इधर है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों मिल गई तो शायद बहुत कुछ कर सकते हम। इसलिए ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, पहले भी था, आगे भी बढ़ेगा। इसलिए मुझे एक शायरी याद आती है, दिल से रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रास्ते का मुकाम नहीं होता, अगर निभाने की चाहत हो तो दोनों तरफ, तो कसम से कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। इसलिए हम शायद ये रिश्ता आगे बढ़ाते ही जाएंगे। और हमारा जो कार्यक्रम है सिर्फ हमें अध्यापकों को नहीं, ये तो सारे दोनों विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तक पहुंचेगा ये रिश्ता। इसलिए फिर एक बार धन्यवाद मैडम आपको। मैं इस संक्षिप्त उद्देश्य के साथ मैडम रेणु जी का छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु के नायर, ये जनरल मैनेजर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। गत 25 सालों से आप बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासनिक एवं ऑपरेशनल स्तर पर कार्यरत हैं। आपने LLM मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ उपाधि हासिल की है। इसके अलावा आप सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स भी रह चुकी है। आपने 1998 में कॉरपोरेशन बैंक में लॉ ऑफिसर के रूप में अपना वृत्ति जीवन प्रारंभ किया। उससे पहले आपने 3 साल प्रोफेशनल एडवोकेट के रूप में भी काम निभाया है। आपने केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के अनेक स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक के रूप में भी काम किया है। 2016 में आपने असिस्टेंट जनरल मैनेजर का पद संभाला और 2020 में आपने डिप्टी जनरल मैनेजर का पद ग्रहण किया। इसके अलावा आपने अपने प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ कारण 2023 में आप जनरल मैनेजर के पद में मंगलूर जोन में जोनल हेड के रूप में आपने कार्य संभाला। आपने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक कार्यशालाएं एवं अन्य संगोष्ठियों में भाग लिया। आपको यूरोपियन देशों में भी लीडरशिप डेवलपमेंट के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। आपके पति AK विनोद शिप जनरल मैनेजर ऑफ यूनियन बैंक है और आपकी बेटी अनघा दिल्ली में जो जिंदल स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ाई कर रही है। आपका सुखी संसार। फिर एक बार मैडम आपको मैं इस सभागार में स्वागत करता हूं। और ये खास बात है, इस प्रेरणा उत्सव के साथ साथ हम हमारे ही कॉलेज के विद्यार्थियों की जो लेखन प्रवृत्ति है उसको उजागर करने के लिए एक पत्रिका का विमोचन हर साल करते हैं। उसका नाम भी प्रेरणा है। उसमें हमारे विद्यार्थियों के द्वारा लिखित कहानियां, कविताएं या कोई चुटकुले संग्रहित है। इस बार बहुत मोटा किताब तो नहीं बना पाए क्योंकि कोरोना के बाद जो रुका था, इस बार हम फिर उसका पुनरुत्थान कर रहे हैं। इसका विमोचन करने के लिए मैं मंच पर उपस्थित अतिथियों से निवेदन करता हूं। अब मैं प्रेरणा 2024 के मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु के नायर जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और सभा को संबोधित करें। Good morning, all. How are you? Fine. या हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है? बट मैं तो आज हिंदी में नहीं बोलने वाला है, इंग्लिश में बोलने वाला है।
क्योंकि मैंने फादर जी से बात कर रहे थे इधर बैठ के, तो फादर जी से ऐसे पूछा था हिंदी में बात करना है इंग्लिश में, तो ही सेड हिज हिंदी इज नॉट वेरी गुड, दैट इज आल्सो सेम थिंग चार्ल्स सर ने अभी बताया था। तो मेरा हिंदी भी, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट गुड, इट्स गुड, बट इट्स ए व्हाट यू कॉल बोल चाल की भाषा, जॉन के लैंग्वेज में, राइट। सो माफ कर दीजिए, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस मोर इन इंग्लिश बिकॉज आई वांटेड टू, इट्स नॉट, इवन दो इट इज अ हिंदी प्रोग्राम, बट आई वांटेड टू इंटरेक्ट विथ यू मोर because in your similar age group, my daughter is also studying, so I know what is your problems. Just wanted to interact with you, that's all. I thank Reverend Dr. Praveen Martis, Vice Chancellor of St. Aloysius, Dr. Mukund Prabhu, HOD Department of Hindi and Management of St. Aloysius College, for giving me an opportunity to deliver the chief guest address in this august gathering. That is Prerana 2024. What is the meaning of Prerana? Inspiration. Who is your inspiration? Who is your inspiration? Nobody is saying about it. Who is your inspiration? So all are discussing. Now today they will think about it. Your inspiration should be yours, yourself. You should be your inspiration. None of you can inspire you. Maybe you are reading the books. Some of you are reading the motivation stories and you get inspired yourself, right? So this is what every student should have in their mind. So now I came to know that many colleges are participating in this event, not only for the St. Aloysius. It's every year they are celebrating. And as Mukundji told that we are Lakshmi is one side and Saraswati is other side. Definitely we will be there, always there Lakshmi for the St. Aloysius College, that is Saraswati. So we will be there because as you know that this is a really developing a younger generation to a good position by the college, and colleges are having a, especially father and all the team members are having a vision to make a good youngsters for the development of India. So we would like to be part of it, and we'll definitely continue the sponsorship to this college, sir. Second thing, I was just noting down some points. So I just wanted to know that how many of you are finding the opportunity in Hindi department? How many of you are finding in Hindi? After studying the Hindi, how many of you are assess that you will be getting a career opportunity in Hindi? How many of you? So which are the, who are, they are in plus 2? Degree. So how many of you are assessed? You have a great career opportunity in Hindi, official language. You know, for example, my Hindi officer, he joined as a Hindi officer in Union Bank. Now he's a senior manager. He can rise up to the cadre of AGM, DGM. He can rise up to the cadre of DGM, not going for any field. He can continue in this field, official language. So there are plenty of opportunities available in the market. My advice to all the students is that now you have to see that what are the opportunities available. And I think with the association of John, we can do some career counseling classes here to give some lectures wherever and all opportunities are available for them. Because all are having, many people, when I was a student, I took the subject of law because of interest. I wanted to be an advocate. That's the reason I became an advocate. Then I started practicing. Then I realized that practicing won't give you some money to, everybody is working for what? Food, comfortable life. So suddenly I started realizing that banks are recruiting as a law officer in the bank. So I applied for that. In those days, it was BSRB selection. So I applied for that. I got selected into Corporation Bank. Now it is Union Bank. So my career started in that way, but once I joined the bank,
I realized that there are ample opportunity in the banking sector itself. I need not stick on to the as a law officer. So immediately I changed to field, general banking field. Then because I want to rose to the certain position. So I become the GM of the bank because of the continuous effort, changing the field, different field I worked. So similar way, you can also, basically you are having a degree of Hindi. So you can also try to find out some opportunity. Later you can mix up other opportunities also, you can rise in the career. So John can arrange some career programs here, so that that is one of the thing we can give it to the students. So many doesn't know about what are the opportunities available. Second thing that yesterday I had an inauguration function of our STC. There is a training program. It's not a training program. It's like a stress relief program. So I asked all the people, what is stress? Do you have stress, students? No stress. No stress. Who is having stress? Few are having. Why the stress is there? Why stress? Actually, there is no stress at all. We are only creating the stress. No stress. Why? Because we are not planning properly. So my advice to all the students, prioritize the things, plan it properly, and don't, even exams are coming, what you will do? Before 10 days you started studying. If you are planning and studying properly, then there will not be any stress. And some students may say, right now, I have not at all studied anything. I may not pass the exam, but that student will be the number one in the class. Right? So I'm not taking much of the time because I think a lot of events are going to happen. Some cultural program is also going to happen. So I just wanted to conclude this with one small story. Maybe many people may be knowing. That is just, I'll start the story. At the age of 5 years, his father died. At the age of 10 years, he has dropped out from the school. At the age of 15 and 16, tried to do lot of activities, but he couldn't succeed. At the age of 19, he married. At the age of 20, he became the father of a child. At the age of 21, his wife left because he doesn't have any work. At the age of 22, he kidnapped his own child to bring back the wife. At the age of, 23, wife come back, but again divorce, again he married, and lot of hardship he has undergone. Whichever the field he worked, he tried to join army, he tried to join law, study law. Whichever the field he worked, he couldn't succeed. Finally, at the age of 65, the person he belongs to US, he has to retire. So government has given a check of $240 to him. So he thought of availing a loan, pledging the check, he thought of availing some loan against the check. So he took a loan. Then he thought that what to do. Then he thought, I won't succeed. Up to 65 years of age, I have not succeeded. How can I succeed? Now, I don't have time to leave also. 65 means human nature is that we will think that we will live up to 65 or 70. After that, death is definitely will happen. That is a concept of humans. So he decided to commit suicide. So he sat and he thought how to suicide. Then suddenly, and one flash came to his mind. He thought that I have some good quality which nobody has having. Now we will give the name. So he started preparing some dish and he given to all the nearby neighbors. Then it became a popular brand. KFC. So you know, any moment you can turn around your life. Only thing that you should have a vision, goal, continuous effort, and to passion to achieve it. All are having dreams, but passion is missing. Passion is the best partner in your life. That is your prerana, and prerana to achieve the goal. All the best. Thank you. आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए श्रीमती रेणुके नायर जी आपका धन्यवाद। अब मैं आज के सभा अध्यक्ष सेंट अलोशियस मानित विश्वविद्यालय के प्रभारी उपकुलपति महोदय रेवरेंड डॉक्टर प्रवीण मार्टिस एसजी जी से अनुरोध करती हूं कि वे अध्यक्ष भाषण देते हुए आशीर्वचन दें। Respected Miss Renuke Nair, the chief guest of today's Prerana,
Dr. Charles Furtado, the Director of Admin Block, Dr. Mukund Prabhu, the HOD of Hindi Department, Ms. Shaila, the convener, Mr. Shanif Abubakar, the student convener, my dear guests, and my dear students and members of the faculty. I'm extremely happy to be here this morning for the inaugural of Prerana as Ms. Renuke Nair, the Lakshmi from Union Bank, has already given us consent, saying that she is very supportive to this Saraswati, the education institution which is 145 years, and now it has become the university which it deserves to be after a long haul of education and also educating more than lakhs of students from this place, and they are all placed in a very high position. And some of them in Union Bank itself. This morning we're reminded of Mr. M.E. Nair. He is from here, from 1971 batch, and this was something very special from that batch. And I must recall the efforts of Mr. M.E. Nair. He is the first one when they came together from 71 batch, how to go about. They wanted to have a reunion here at St. Aloysius College at that time, and they all came together, somewhere about 10 of them. And Mr. M.E. Nair recalled his time here in 71, how he found he came from a very poor family background. They did not have anything, but the college supported at that time. And then he joined Corporation Bank and he becomes the MD. So immediately said, not just coming together, we must give back to this college something. And he was the first one to give 10 lakhs from his personal account. And then others started giving money. You know how much they collected? Almost about 2 crores. That is the amount from 1971 batch, thanks to Mr. M.E. Nair. That was not enough. Then he said, I would like to also establish a corpus fund here for the poorer students, about 1 crore later on that he gave here to establish that fund. Also helped us from Union Bank to get some CSR funds, about 25 lakhs at that time. Another old student of ours, Mr. Rajkiran, was the MD, and they all worked together and Union Bank supported us. And after that, we have been getting a lot of support from Union Bank, thanks to all these great men. And now we have got GM heading it here, Ms. Renuke Nair, and she was very positive and encouraged all of you, gave you the very beautiful inspiration story of Colonel Sanders and about his life, how he began at the young age and things were quite difficult for him, but now that has become a Kentucky brand. You all know if we can work hard, if there's a passion within us, we can make it big. It is not the situation, it is only the desire within and the passion within and the inspiration that we draw it from our own self. That's why inspiration is not from outside. Inspiration that you have to look at yourself and draw inspiration from yourself, saying that I can do it. Your language should be always positive. When your language is positive, you can do wonders in this world. That's why the name Prerana from Hindi department, they all try to speak Hindi. I'm also quite comfortable now to speak English because I was trying to speak Hindi, but then all of them spoke English. I too studied in Hindi here itself in this college. I too was a good student of Hindi, but unfortunately now so many years after passing out, I find difficult to speak Hindi, but I understand Hindi very well. And we had an advantage. The Konkani students here had a lot of advantage writing Hindi. Because Konkani and Hindi, there are similar words. Sometimes we don't get a word in Hindi, we would put a Konkani word and finally say, hey. So you get marks there because you have to write a lot in Hindi sometimes. So we would fill these pages. At the end, we'll have to fill those pages by not getting sometimes words, but then these Konkani words are similar and write it in Hindi and finally say, hey, it becomes a Hindi word. And I used to tell my Hindi teacher, she used to smile, but that time Mukundji was here. Mukund Prabhu was here, but he was not teaching me. Madam Judy and others were teaching me at that time. And it was a wonderful time at St. Aloysius College at that time. So we studied here and also graduated from this institution, did my BSc here. And today I'm very happy we did not have this kind of fest during that time. Now we are all fortunate. They have got so many fests here,
for Hindi students, for English and other languages. So you got a lot of opportunities to grow. As Madam said, we will ask Mr. John to conduct the career guidance. I think that was very important, Madam. We are very happy that you are supporting our present students because the placement is very important. Like, all of you come with a desire here. Your parents also have sent to this institution so that you get a job. Or for the future, you need to do something. There are a lot of inspirations here. Okay, all of them are supporting you. So we need also support to conduct this career guidance. In the sense, we need to get the best of people to train you all. And we need a lot of funds for this. I'm grateful to Madam and the Union Bank for this support, that for the future, I'm sure we can encourage and have wonderful training programs for the students here so that you all get better careers. Not only career, you can also get an opportunity. There are lots and lots of opportunity. You must find out what is best for you. First of all, you have to find out what is your aptitude. We'll also help you to find out what you are good at. Once you are good at it, is not a job that you are doing it. As Madam said, there is no stress. Can you look at Madam and say there is a stress? She's a GM of such a big Union Bank and she's always smiling. That says she has got a lot of work to do, but then time management, how to do this work, the better planning and everything, when it is done, there is no stress for anyone. Only when you don't plan it, everything you keep it postponed and keep it at the last minute, then there is a lot of stress because you don't know what to do. And after that you forget and things don't go well in your life. So plan well. That's why when the students join here in the first year itself, though it looks very silly, I ask them a question: what is your future? And most of them say, Father, I have not yet decided. I said, you first decide and get inside the class. Only when you decide and have a desire that I want to become somebody, then you start from that day itself. If you don't have that desire and a goal, you don't know what to do. You'll be just whiling away your time, maybe good at studies, good at other activities, but then you are losing time. Time is money in today's world. We can't even lose a second. We need to work hard. We need to plan. We need to have a future ideas what to do. And then you get on with this. There are a lot of students, there are faculty members and others who are ready to help you. So we are here to see that you all get better jobs, better placed, maybe for higher education institutions. We have got more than 40 MOUs with international universities all over the world. So there are so many opportunities, and many students who are good at it, they come to our office and avail such opportunities. If you do not know, you are most welcome to come to our offices and understand where we have got such very good MOUs. When you have got MOUs, your fees also is reduced when you go from this institution. Otherwise, there are agencies where you go from, your fees increases. Here it is much, much less, and also you get better support because we know these institutions well. That's why, my dear students, there are plenty of opportunities. The Prerana, as it says, is inspiration. Today, as Mukund Prabhu beautifully said it, we have become a university. Earlier we used to call it as intercollegiate. Now it is inter-university. Between Mangalore University and St. Aloysius University, these competitions will be going on. Not only this, now onwards we'll be calling many, many universities to come forward and have competitions so that I can raise the bar and see that our students during this time of competition understand one another. You interact. You are coming from different colleges. When you interact, when you know your own gifts, your own talents, you'll be working together and say, okay, this is the person that I must collaborate with. This person I can work with. I can understand. Within the college, within the university, outside the university, you get a lot of inspiration. Work on it. Every moment, your eyes and ears should be very sharp to see that what kind of opportunities do I have to grow in my life, learn something so that I can make it big and I can make my parents happy, I can make my institution happy and the family and the rest of them. So my dear friends, today as you are here, work together, give your best. Even if you don't get a prize, your participation is more important. Once you participate, if not today, tomorrow you start getting these prizes. Nobody gets in the beginning itself, and not to get a first prize in the beginning itself because you don't understand the value of it. Only when you lose it several times and you get it, you know the value of it. Otherwise, you start getting from the first time. When you lose somewhere on the way, you find it very difficult to accept that, but then accept the failures in life. They are the ones who teach you a lot and give your
best. Whatever that you do, don't worry about the prizes. They're all given by the judges. Judges also come from a different perspectives and they see it from another perspective. You may be the winner from your side, but then don't look at saying that you failed. But say you're done well. I'm continue to do well in these competitions and go on succeed in your life. Be positive and proactive. You are the winner of life. Thank you. Wish you all the best. God bless you. आपके उत्साहपूर्वक शब्दों और आशीर्वचन के लिए आपका धन्यवाद। इस उद्घाटन समारोह के अंतिम चरणों में धन्यवाद समर्पण करने के लिए संघ के सचिव शनीफ अबू बकर को आमंत्रित करती हूँ। मैं आज के समापन समारोह महात्मा गांधी जी के कहे गए कुछ शब्दों से शुरू करना चाहता हूँ। गुलाब को उपदेश देने की ज़रूरत नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु के नायर जी, जनरल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ना सिर्फ आज यहाँ आई, लेकिन जब हम आपके पास आए आपने खड़े होकर हमारा स्वागत किया और आप तब तक ना बैठी जब तक हम बाहर ना गए। ये मुझे ज़िंदगी में बेहतर बनने का प्रेरणा देती है। धन्यवाद मैम। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रेवरेंड डॉक्टर प्रवीण मार्टिस एसजे जी, सेंट अलोयसियस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति, हमारे इस प्रेरणा में मार्गदर्शन करने के लिए आपको पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद फादर। आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर चार्ल्स वी फोटाटो जी, सेंट अलोयसियस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के निदेशक को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे लिए एक शुभ चिंतक बने रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद प्रभु जी, जो न केवल हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक बनने के लिए और उनका जितना इस कार्यक्रम में योगदान है इसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे हिंदी संघ के अध्यक्ष शैला मैम, लीलू मैम, गोविंद सर और हिंदी विभाग के प्राध्यापकगण नदाफ सर, संध्या मैम और रॉयसी मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, मैम। हिंदी की दूसरी सचिव और मेरी प्रिय साथी फातिमा नशवा को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेरणा के प्रायोजक टॉलिक और कई दूसरे प्रायोजकों और जॉन अब्राहम जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। प्रायोजक समिति, जनसंपर्क समिति, अनुरक्षण समिति, टेक्निकल, स्टेज, मीडिया समितियों और सभी स्वयं सेवकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिर में हिंदी संघ के सारे सदस्यों को और यहाँ उपस्थित सभी अन्य कॉलेजों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप यहाँ आए और इस प्रेरणा में भाग लिया, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शानिफ अबू बकर। अब हमारा उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ। सहृदय धन्यवाद।